Hello students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are good. So students, today we have chapter number 15 which is simple interest. Simple interest means कि आपने किसी से उधार ले लिया. So when you borrow some money, ठीक है, तो आप उस बोरोड मनी पर आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो उसे आप क्या कहते हो? इट इज रिफर एज सिंपल इंटरेस्ट. ये आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, बट जब आप बड़े हो जाओगे ना तब यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, ये सब आप देखोगे इन्वेस्टमेंट करते वक्त. तो अभी हम समझ लेते हैं जो बड़े होकर हमें और भी इजी ये लगे. सो वी कीप आवर मनी इन द बैंक कीप्स आवर मनी एंड इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. यानी कि जो अमाउंट हमारा होता है जो हम बैंक में सेव कर रहे हैं, अभी हमें समझ रहे हैं विद एग्जाम्पल ऑफ अ बैंक. तो यहाँ पर जो अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 15,000 यहाँ पर डिपॉजिट करे, दैट इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल फॉर विच इट पे अस सम अमाउंट. द अमाउंट द बैंक पे अस फॉर यूजिंग अ मनी इट्स कॉल्ड द इंटरेस्ट. यानी कि इस अमाउंट पर जो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट. ओके, सो नाउ if Mr. Kumar keeps 2,500 in the bank for 1 year, the bank pay 5% interest on his money. How much money will Mr. Kumar get from the bank after 1 year? So students, from before that solving a question, I have to explain some terms related to the simple interest and a formula for it. So first of all, the formula is P into R into T, which is divided by 100. In this PRT, P stands for principal, R stands for rate of interest, and T stands for time. Okay, so these three is this. Now the second term we have, that it's called amount. Amount means the principal we have deposit in the bank account and the interest paid by the bank for a certain time period. So the total amount, the principal with the interest, it's called the amount. So principal plus interest is referred as amount. Okay, now so we have principal, rate of interest and time period. Okay, and now we have to calculate the amount. So 2,500. अब इंटरेस्ट क्या है? 5% ऑफ 2,500. तो 5% ऑफ 2,500 क्या होगा? वी हैव टू कैलकुलेट. 2 zeros are cancel out with 2 zeros. 5 multiplied by 25 is 125. We just adding these two numbers together. So our answer is 2,625. Important rules for simple interest. A, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है कि सिंपल अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे. सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना तो अमाउंट में से हम अपना प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100. Ritu deposit 1,400 in the bank for 1 year. In the end of 1 year, she get 1,680 rupees in her account. How much interest did she get from the bank? इट मीन्स कि हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, विच मीन्स दिस इज अ प्रिंसिपल, दिस इज अ अमाउंट. So amount minus principal is referred as your interest. So 280 is your interest. Okay. Find the simple interest on 600 for 1 year at the rate of 8% per annum. So principal, which is 600, 600. Rate 8%, 8%. Time 1 divided by 100. So 2 zeros are cancelled out with 2 zeros. 6 multiplied by 8 is 48. This is your final answer. Next we have Tarun borrowed 3,800 for 8 months. Find the amount to be paid at the rate of 10% per annum. Per annum means कि पूरे साल के लिए, but हमें टाइम क्या दिया हुआ? 8 months के लिए. So what we have to do? First we have to convert this month into the years and then we are solving it. So this is your principal, rate of interest, time 2 by 3. So 2 is here and 3 will be with the 100 as your denominator. So 30, यहाँ पर 2 zeros are 2 zeros cancel out. 38 multiplied by 10, 380. Multiplied by 2 is 760 divided by 3. This is your final answer. Now what is the amount? Principal plus interest. So 4,053.33. Find the interest to be paid after 1 year. So this is your principal, this is your rate of interest. तो कितना interest हमें paid करना? Interest find out करना है. Okay. Zero is cancelled. 68 rupees. यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा? 68 rupees. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सॉल्व कर देती हूँ. आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में. सो 1200 आपका प्रिंसिपल है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 3 6, 6 + 1 7, तो 7
टाइम हमारा 1 है, 100 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो 3 आया है, जब मैंने इसे सिंप्लीफाई करा तो मेरा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 7/3 आया। तो 7 will be multiply on your numerator side and 3 will be multiply on your denominator side. So 3 1s are 3, 3 4s are 12, 2 zeros are cancel out, 4 7s are 28. So your principal will be 28 rupees. Okay. Next, find the interest and the amount. आपको इंटरेस्ट और टाइम अमाउंट करना है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2500 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, 2 zeros are cancel out, 12 multiply by 25, 4 3s are 12, तो 2 5s are 10, 1 2 2s are 4, 5 5 2 0 10 1 3, तो 300 ये आपका आ गया क्या, ये आपका है इंटरेस्ट। 300 प्लस दिस, तो आपका जो अमाउंट होगा, अमाउंट इज इक्वल टू 2800 रुपीज। Okay, so in the same manner you have to solve rest of the questions. Find the interest and the amount when. So you have to now find the interest and amount, the same thing we are doing here. So you have to solve it. Ahmed deposit 45,000 for 8 months in a bank. If the rate of interest is 7.5%, find the amount he will get back from the bank. So first we have to convert this into a year, because this is in month, and while we calculating the rate of interest, we take the unit of years. So 8 by 12, your answer will be 2 by 3. 4 5 000 45,000. Your rate of interest is 70.5. Multiply by 2. 2 will be multiplied with your numerator and 3 will be multiplied with your denominator. So always remember this. Okay, so now 2 zeros are cancel out. 1 0 is cancel out. 3 1s are 3. 1 5 15, 15 2s are 30, 30 multiply by 75, 3 5s are 15, 1 3 7s are 21, 22 and 0. So 2200, 250 is your interest, और उन्होंने कहा है कि अमाउंट बताना है, तो ये हम प्लस कर देंगे 45,000 में। So 4 2 प्लस आपका आंसर आ जाएगा 47,250। यहाँ पर लिख देती हूँ आंसर, अमाउंट इज 47,250। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 413% ईयर एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/3 years at a rate of interest of 8.5% on a principal of this। हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, अमाउंट प्रिंसिपल है आपका 5675 मल्टीप्लाई 100, आपका इंटरेस्ट है 8.5। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4 3s are 12, 12 plus 1 is 13, तो 13/3 आपका आ जाएगा। यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 5 नहीं, सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप इसे बच्चे थोड़ी कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आएगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो प्रिंसिपल में आप ऐड कर दोगे, तो आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, नाउ मिस्टर तरुण गुप्ता लेंड 4,250 एट 7% पर एनम, हाउ मच विल आई गेट बैक टू द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो 4250 मल्टीप्लाई बाय 7, 10 11 100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 0 इज कैंसिल आउट 0। यहाँ पर आपको फिर से कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा, यानी कि 4250। ये 0 नहीं हटाते, यहाँ पे इजी हो जाएगा फिर हमारे लिए। यहाँ पर आएगा 2125। ठीक है, अब इसे आपको मल्टीप्लाई करना है 77 से और फिर डिवाइड कर देना 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट अ बैंक पे अस फॉर यूजिंग आवर मनी इज कॉल्ड द interest. Amount is equal to principal multiplied by interest, principal minus interest. This is principal plus interest. Okay, the money that keep in the bank is called principal. Formula for calculate the simple interest is P multiplied by R multiplied by T multiplied by 100 divided by 100.
This is your last question. You have to solve it, get your answer and write there. Okay, I hope students कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में होगा. बहुत ईजी है. जस्ट यू हैव टू take your formula very seriously and correctly put the values into the formula and then the pure calculation is here. तो जितनी ज़्यादा strong आपकी calculation होगी उतना ज़्यादा आपके लिए easy हो जाएगा. So students, for today that's it. Now I will meet in your next class with a new chapter. Till that, bye bye. Have a good day.